Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin, Ethereum are the leading private virtual digital assets made a valiant attempts at breaking past crucial levels this week. While the second largest cryptocurrency by market value, the Ether, emerged successful, Bitcoin, the largest cryptocurrency, has failed to do so. CFTC filing a lawsuit against the Binance, and simultaneously, New York federal judge putting a pause on Binance buying Voyager has dampened the sentiment. Meanwhile, the crypto community continues to rally around this asset class as banking sector uncertainty dented equities appeal. Bitcoin hovered near $28,000 mark, more or less same as week earlier, while Ether managed to cross $1,800. The cryptocurrency market cap has decreased by 1.26% to $1.17 trillion in the last 24 hours. Total market volume has risen 7.74% to $50.81 billion, which includes a portion of $5.27 billion in decentralized finance and $45.05 billion in stablecoins. Elsewhere, trading volume for XRP spiked to billions of dollars on Upbit, Bithumb, and Korbit, three of Korea's top exchanges by volume, on the back of the token's 26% rise in the past week. And now let's cut across to Manoj Dhara to understand how the global cryptocurrency market is performing today. The global cryptocurrency market cap was trading lower at around $1.17 trillion, decreasing by 1.3% in the last 24 hours. However, the total crypto market volume has actually is down by 13% at $44 billion. And according to DeepDAO, decentralized autonomous organization Treasuries, which has grown rapidly, recently surpassed a milestone of $25 billion for the first time. And furthermore, the figures of $25.1 billion represents around 40% of the total value locked for all the D5 as reported by the DeFi Llama. The Optimism Collective is a leader in terms of the treasury funds, and which commands over $5.5 billion, giving it a market share of 22% overall. And meanwhile, treasuries of Arbitrum and Polygon account for $4.4 billion and $1.5 billion respectively. So the game of Ethereum's layer 2 is actually picking up. And meanwhile, the US GDP for the fourth quarter of 2022 showed an economic growth of 2.6% versus expectations of 2.7%. This change came primarily due to the downward revision of the consumer spending and exports, reports have said. And if we talk about Bitcoin, was trading at $27,920, down 2.3%. Ethereum, the second largest crypto, was down by 0.3% to trade at $1,794. Solana Sol, if we talk about the other altcoin, on my left is Solana Sol, was trading lower by 1.3% at $20.3. Next on the list was Polygon Matic, down by 2.3% to trade at $1.1. Doge, the popular meme coin, was trading down by 0.6% at $0.074. Next was Shiba Inu, was trading down by 0.5%. Ripple's XRP token was trading at $0.53, down by 2.3%. In an interesting news, trading volume of XRP spiked to billions of dollars on Upbit and Bithumb and Korbit, three of the Korea's top exchange by volume, on the back of tokens' 26% rise in the past week. And if we talk about the other altcoins, Binance BNB was up by 0.1% to trade at $316. Next was Cardano's ADA token, trading higher by 2.8% to trade at $0.38. Leading cryptocurrencies and NFT tax provider CoinLedger has launched an automatic tax reporting service for the Cardano's investors. In a tweet, CoinLedger said that ADA investors should quickly get autonomous transaction tax reports by adding their wallet address to its platform. That's a report which is connected to the Cardano. Please keep an eye on it. Next on the list was Avalanche AVAX,
was trading at $17.3, higher by 0.2%, and Polkadot was up by 0.5% at $6.1. Thank you, Manoj. Moving on, crypto investors are fleeing Circle's USD coin stablecoin, with many of them switching to Tether, which has reached a 22-month high in market share. USDC token net outflows has surpassed $10 billion since March 10th, when regulators shuttered key reserve banking partner Silicon Valley Bank. US payments firm Circle has weathered SVB's collapse, and USDC has re-established the dollar price peg it lost in the immediate aftermath, but the token has still dropped 23% from its one-time $43 billion market capitalization, according to crypto price tracker CoinGecko. Outflows surged starting March 10th as SVB imploded, locking $3.3 billion of cash reserve deposit in its vaults for days until government intervention. The event tossed the stablecoin market into turmoil as USDC and smaller stablecoins lost their price peg temporarily, and also highlighted how fiat-backed stablecoins rely on the soundness of traditional financial systems. Over the past week, investors have redeemed $1.5 billion more USDC than new issuance, including bankrupt crypto broker Voyager, which redeemed $150 million on Tuesday. As USDC pegs its price at $1, a decreased token supply means investors have exchanged USDC tokens for US dollars. The result is net outflows. तो विशाखा भी पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, 3 बैंक्स का हमने कोलैप्स देखा है, जिसमें कि सिल्वरगेट है, सिग्नेचर है, एसवीबी बैंक है। तो एसवीबी बैंक के कोलैप्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ सर्कल, उसका $3.3 बिलियन जो है उसमें बैंक में था। तो ऑब्वियसली एक मार्केट सेंटिमेंट हम जानते हैं कि बन जाता है। तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने यूएसडीसी से अपने जो फंड्स हैं वो विड्रॉ करने शुरू हुए, जिसकी वजह से जो है यूएसडीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट $10 बिलियन का जो है नुकसान हुआ, और इस वजह से वो जो कॉइन है वो डीपेग भी हो गया, और इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो टेथर को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने जो है यूएसडीसी से अपने फंड्स निकाल कर टेथर में जो है इन्वेस्ट करने या फिर पार्क करने शुरू कर दिए। और तो अब हालांकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब काफ़ी स्टेबल है सर्कल, और लेकिन और जो डीपेग हुआ था यूएसडीसी वो अब पेग भी हो गया है, लेकिन अभी भी 23% जो है वो यूएसडीसी अभी फिलहाल नीचे है। तो यहाँ हम टेथर को तो एक तरह से टॉम क्रूज भी बोल सकते हैं स्टेबल कॉइन्स का। yes. तो बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टेबल कॉइन्स में थोड़ा सा एक टर्मोइल दिखाई दिया, लेकिन फिर डीपेग होने के बावजूद भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी और यहाँ ऑप्टिमिज्म दिखाई दिया। बिल्कुल। Moving on, MicroStrategy, a software company that was co-founded by crypto advocate Michael Saylor and that holds a large amount of Bitcoin, prepaid the remaining principal on its $205 million loan from failed crypto-focused Silvergate Bank, according to a filing with US Securities and Exchange Commission on Friday. In addition, MicroStrategy said it purchased another 6,455 Bitcoins for roughly $150 million over the past 5 weeks. The loan payoff was made last Friday and totaled $161 million. As part of satisfaction of the loan, 34,619 Bitcoins held as collateral were returned to MicroStrategy custody. The company took out the loan last March. The acquisition of another 6,455 Bitcoins brings MicroStrategy's holding up to 138,955 Bitcoins purchased at an average price of $29,817 each and worth roughly $3.88 billion at the current Bitcoin price of $27,900. MicroStrategy also disclosed that it has raised $339.4 million this year through the sale of its shares and used the proceeds to pay back the loan from Silvergate. तो यहाँ एक अच्छी खबर है क्योंकि MicroStrategy ने अपना 200 मिलियन से ज़्यादा का जो लोन था वो सिल्वरगेट को वापस से लौटा दिया है, और इसके साथ साथ कुछ फंड भी इन्होंने अभी रेज किया है, और इससे जो है बिटकॉइन के प्राइस में भी हम देख सकते हैं कि एक रैली आई है, जिससे कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया है क्योंकि काफ़ी बिटकॉइन यहाँ इन्होंने खरीदे हैं। तो जो भी उन्होंने कोलैटरल में दिए हुए थे बिटकॉइंस, वो उन्होंने अपना लोन चुकाकर वो बिटकॉइंस वापस ले लिया, और साथ में 6,455 बिटकॉइंस और खरीदे हैं। और इसीलिए ऑब्वियसली जब भी मार्केट में बाइंग आती है तो एक बुल रन होता है, कि एक बेयर मार्केट, जो बुल मार्केट है वो हम देखते हैं, और पॉजिटिव रैली देखते हैं, तो वही बिटकॉइन में हम रैली देख रहे हैं। मूविंग ऑन, according to whale data, there has been a lot of whale activity recently. The most anticipated Ethereum Shanghai upgrade, which will allow staked Ethereum withdrawals, has cryptocurrency whales buying ETH worth millions.
This week has seen several ETH transfers from cryptocurrency exchanges to wallets, according to Whale Alert. 11,529 ETH worth $20 million were recently transferred from Bitfinex. There was also transfer from Bitfinex of 13,341 ETH worth $23 million. A whale transferred 72,999 ETH worth $129 million from one wallet to another. Given that both wallets contain essentially identical token types, it is assumed that they both belong to the same whale. The recipient wallet then sent 83,000 ETH, totaling $145 million, to an unidentified wallet. More ETH transfers, including ETH 20,899 from Coinbase, 12,499 ETH from Binance, 21,451 from Coinbase, and 14,070 ETH from Bitfinex, were also reported by Whale Alert. तो ये हमने हमेशा देखा है, जब भी कोई बड़ी खबर आती है, कुछ भी मार्केट में एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है, तो उसके आसपास चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट बनता ही बनता है. तो यहाँ पर इथीरियम का मच अवेटेड शंघाई अपग्रेड हो रहा है, तो उसको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है. और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं उनके बीच ETH को लेकर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है. और उससे जो है आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न कि BTC से ज़्यादा इथीरियम को फिलहाल जो है वो पुश मिल रहा है और उनका जो प्राइस है वो अपटिक है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. और इसके साथ साथ जो शंघाई अपग्रेड है इथीरियम का, इसके चलते ही ऐसा हुआ है. तो अभी मार्च में ये अपग्रेड होना था, लेकिन अब फाइनली जो ये खबर है कि अप्रैल में ये अपग्रेड होने वाला है, तो सबकी इस पर नजर है और इसी के अकॉर्डिंग ये व्हेल एक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ गई है. बिल्कुल. Moving on, this week optimism surged after Coinbase announced its partnership with Coinbase. Optimism is designed to accommodate the same types of services like decentralized finance and digital art trading, but at a much better speed and cost. In recent development, Coinbase, a leading cryptocurrency exchange, revealed its plans to adopt Optimism as the foundational layer for its new Layer 2 platform named Base. This announcement sparked a notable 22% surge in the price of Optimism. तो लेयर 2 का नाम जब से आया है ब्लॉकचेन में, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाले हैं लेयर 2 से. तो यहाँ पे कॉइनबेस ने जो पहले अपनी लेयर 1 लॉन्च की थी जिसका नाम बेस था, उसके बाद ये ऑप्टिमिज्म के साथ पार्टनरशिप यहाँ करने वाला है, जो कि इसके लेयर 2 में एक तरह से बहुत बेनिफिशियल ये पार्टनरशिप होने वाली है. और इसके चलते 22% सर्ज भी किया है बेस ऑप्टिमिज्म. तो वही ऑप्टिमिज्म का जो पार्टनरशिप है वो, जैसे कि आपने बताया, कॉइनबेस के लेयर 2 के साथ है, इसीलिए उसमें हमने एक अपटिक देखा है. और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, इथीरियम को जब फ़ायदा मिला कि उसका शंघाई अपग्रेड हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा आगे हम देखें रोल आउट हो रहा है, जहाँ ऑप्टिमिज्म लेयर 2 पे भी हो रहा है, और आगे हम देखेंगे तो आर्बिट्रम को भी ये फ़ायदा मिल रहा है. तो इट्स एक्चुअली अ रोलिंग इफेक्ट. और लेकिन देखा जाए Web3 पूरी कम्युनिटी के लिए इट्स वेरी पॉजिटिव. बिल्कुल. सो मूविंग ऑन, the Arbitrum ARB airdrop last week was one of the most memorable events in the history of Ethereum. Hundreds of thousands of Arbitrum users were rewarded for using the platform with ARB governance tokens. However, the price of ARB is quickly heading to new all-time lows despite Arbitrum's market share increasing substantially. Arbitrum is still processing more daily transactions than Ethereum mainnet, which had 1.1 million on Monday. Despite the poor performance, ARB is still the 40th largest cryptocurrency with a market cap of $1.44 billion. On top of that, Arbitrum's Layer 2 market share increased to 66.25% according to data from L2Beat. The TVL on Arbitrum also increased by 47% and is now $5.62 billion. जैसे हमने बात की कि it's a trickling effect, जहाँ इथीरियम को फ़ायदा मिल रहा है, वही फ़ायदा फिर ऑप्टिमिज्म को भी मिल रहा है, ARB को भी मिल रहा है, Arbitrum को भी मिल रहा है. तो हुआ ये कि Arbitrum ने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपने जो गवर्नेंस टोकन है वो एयर ड्रॉप किए. और ऑब्वियसली जब मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप होता है. तो यहाँ Arbitrum का भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर गया. लेकिन उसके बावजूद अच्छी खबर ये है कि इट्स स्टिल द 40th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी. एंड इसके बावजूद उनका मार्केट शेयर जो है वो भी बहुत अच्छा है. और TVL में भी हम देख रहे हैं कि एक जंप देखा गया है. जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके TVL में भी एक जंप देखा गया है जो कि 47% है, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट फिगर. जी. Moving on, FTX founder Sam Bankman-Fried will plead not guilty on charges of trying to evade campaign financing laws and attempting to bribe one or more Chinese government officials, Reuters reported on Thursday. Bankman-Fried previously pleaded not guilty to 8 charges of fraud and conspiracy awaiting trial in October. With the addition of accusations of attempting to evade campaign finance laws and bribery of Chinese government officials,
Bankman-Fried now faces a 13-count indictment. Along with charges of fraud, prosecutors accused Bankman-Fried of conspiracy to make unlawful political contributions in February. The founder of bankrupt crypto exchange was then accused of trying to bribe one or more Chinese government officials with around $40 million worth of crypto in an attempt to unfreeze certain amounts of his trading firm, Alameda. तो यहाँ पे SBF के जो ट्रेडिंग फर्म एलामीडा थी उसके जो कुछ अमाउंट थे उसको अनफ्रीज करने के लिए उसने बोला जा रहा है कि यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अराउंड $40 मिलियन की जो ये ब्राइब है वो दी। और लेकिन अभी भी जैसे कि हम जानते हैं कि सैम बैnkman-फ्रीड कभी भी ये एक्सेप्ट तो नहीं करते, तो यहाँ भी ऐसा ही आगे होने वाला है कि वो यही करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी उन पे 12 चार्जेस थे और अब इसको मिलाकर 13 हो गए हैं, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो ही इज श्योरली गोइंग टू जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, तो चाहे वो कहते रहे कि ही विल प्लीड ऑफ बीइंग नॉट गिल्टी, बट 13 काउंट्स बहुत सारे होते हैं। किसी एक, जैसे कि आपने कहा, किसी एक में भी चार्ज में अगर वो गिल्टी साबित होते हैं देन वील हैव टू सी क्या क्या चार्जेस उन पर लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। Disney is in the process of laying off 7,000 staff in an attempt to control costs and develop what CEO Bob Iger calls a streamlined business. The cuts include its Metaverse team, with its 50-strong headcount being let go, the Wall Street Journal reported, citing people familiar with the matter. Most Metaverse majors appear to be unaffected by the news. Decentralized Mana token is up 1% in the last hour, while Sandbox Sand is flat. तो यहाँ हमने देखा पिछले कुछ टाइम में जैसे मेटा ने भी अपना 11,000 बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया मेटावर्स डिवीजन में, और हम देख रहे हैं कि अब डिज्नी ने भी अपना 7,000 अगेन। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो मेटावर्स से हट कर शिफ्ट होकर AI की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इस खबर पर, जैसे कि इलॉन मस्क की तो आदत है ही, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, तो इसमें भी इन्होंने इस नेगेटिव न्यूज़ में भी कुछ उन्होंने पॉजिटिव ढूंढ लिया है कि अब जो है वो कार्बन एमिशन कम होगा तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, कुछ इस तरह से उन्होंने कमेंट किया है। जी बिल्कुल। तो इलॉन मस्क की आपने बात यहाँ गई, तो वो पहले से ही ऐसे देखा जा रहा है कि मेटावर्स के थोड़े खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि एक सिर्फ पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये मार्केटिंग गिमिक है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही सब ब्रांड्स ये कर रहे हैं, और अब फिर से उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी खबर है एनवायरनमेंट के लिए। तो ले ऑफ्स की यहाँ पे बात करें तो जैसा आपने बताया मेटा ने पहले ले ऑफ किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट और अब डिज्नी, तो एक तरह से थोड़ा नेगेटिविटी भी फैली हुई है इस तरह से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इन ले ऑफ्स की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये कॉस्ट एफिशिएंसीज देखना चाहती हैं, तो दिस कैन बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। यस, बिल्कुल। Moving on, the direct tax collected by way of tax deducted at source under Section 194S of Income Tax Act 1961 on payments made upon transfer of virtual digital assets aggregates to Rs 157.9 crore up to March 20th, 2023 for financial year 2022 to 23. This was stated by Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in a written reply to a question in Rajya Sabha on Tuesday. The minister stated that crypto assets are currently unregulated in the country. However, transactions in cryptocurrencies are subjected to provisions of various laws like the Prevention of Money Laundering Act 2002 and Income Tax Act 1961. Chaudhary further stated that the Financial Stability Board states in its consultative document titled Regulation, Supervision and Oversight of Crypto Asset Activities and Markets dated October 11, 2022 that investment and activity in crypto asset market are largely self-contained and are mostly for speculative purposes with limited connection to the real economy. तो नंबर्स यहाँ आ चुके हैं जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है देखा जाए तो 158 करोड़ विच इज़ अ बिग अमाउंट। तो इतना क्रिप्टो जो टैक्स था उससे कलेक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और पंकज चौधरी ने, और यहाँ भी कहा है कि ये अभी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं दे आर अनरेगुलेटेड। तो आई थिंक कि अभी ये आंकड़े तो आ गए हैं, लेकिन अभी सबकी नज़र जो है वो G20 पे ही रहने वाली है कि यार रेगुलेशंस आगे आने वाले जो सितंबर में होने वाली है। अगर पिछले साल की टैक्स बात करें तो अब 60 करोड़ जो टैक्स था वो कलेक्ट किया गया था, तो इस बार मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा टैक्स है। तो मतलब कि एक्चुअली इंडिया इज़ काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्ट और इन्वेस्ट और उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी रेगुलेशंस की तरफ से हमें थोड़ा सा अगर एक पॉजिटिव पुश मिलता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है, तो आई थिंक काफ़ी पोटेंशियल है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू इफ नॉट
only crypto, but Web3 as a Virtual whole. digital assets Yeah. as a whole, yes. So moving on, Yuga Labs, the company behind Bored Ape Yacht Club, NFT, and Gucci announced their collaboration on an unnamed project to kick off Metaverse Fashion Week. According to a Gucci statement, it has to do with the other side Metaverse role-playing game. The action is being taken as NFT brands look for far and wide for new sources of income as a protracted bear market has stifled NFT trading, and an arms race among rival NFT marketplaces has reduced creator royalty payouts. तो यहाँ हमने देखा जो लास्ट ईयर क्रिप्टो विंटर आई, फिर अभी बैंक्स कोलैप्स हुए, तो कहीं ना कहीं एनएफटी मार्केट हमेशा अफेक्ट होती है, ज़्यादा नहीं हो पर कुछ हद तक इफेक्ट होती है. तो आई थिंक हालांकि युगा लैब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एनएफटी की जब बात होती है, दे हैव द मैक्सिमम शेयर्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड सेल्स, पर हर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अलग एक प्रोडक्ट्स निकालने पड़ते हैं. तो अभी युगा लैब जो है उनकी अपना मेटावर्स तो है ही, अदर साइड उसकी एनएफटीज है अदर लीड, लेकिन अब जो है वो उसके अंदर भी गुची के साथ कोलैबोरेट करके फैशन वीक्स लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं. तो आई थिंक युगा लैब्स के जो प्लान्स है वो बहुत सेट हैं कि दे हैव टू ग्रो. करेक्ट. और इसके साथ अगर हम फैशन वीक की बात करें तो डिसेंट्रलैंड पे मेटावर्स फैशन वीक चल रहा है. बिल्कुल. और इसके साथ साथ जितने ब्रांड्स है, गुची है, एडिडास है, नाइकी है, सभी लोग अपने जो अच्छे अच्छे कलेक्शन है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग काफ़ी मज़ा भी उठा सकते हैं. जैसे कि पहले भी जो डिसेंट्रलैंड का मेटावर्स फैशन वीक रहा बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत अच्छे वीडियोस बाहर निकल के आए, बिल्कुल रैंप वॉक्स, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गेम्स भी वहाँ पे है. तो आज लास्ट डे है मेटावर्स फैशन वीक का, तो देखते हैं कि अभी आज क्या क्या और होने वाला है. बिल्कुल. So we'll keep you updated. That's it in this episode of Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.